patron, Professor Ekta Gupta, Principal, Government College of Education, I heartily welcome you all to this important workshop on effective communication and leadership skills organized by IQAC, Placement Cell, Alumni Relations Cell and Mentor-Mentee Cell of GCOE Jammu. I welcome all the dignitaries present over here and my dear colleagues. You don't change the world with the ideas in your mind, but with the conviction in your heart. One such prolific personality is our guest for today's event. Please welcome with a huge round of applause, Mr. Mehran Khan sir. Now I request Principal Ma'am, Professor Ekta Gupta, to present a planter and a token of appreciation to Mr. Mehran Khan sir, national and body. Let me tell you, I am also a painter. Wow. I can understand and I appreciated the wall you people have painted outside. Lovely. To learn a language is to have one more window from which to look at the world. One such prolific personality is our guest for today's event. Welcome with a round of applause to Ms. Akriti. I request Professor Rajinder Kaur ma'am to please present a planter to Ms. Akriti. Big round of applause. 2020 to 2022, Akriti ma'am is a TESOL certified entrepreneur. Very vital role to play a professional role. अगर आपको लगता है कि ये बॉटलनेक है, नहीं आती है, नहीं बोल सकते हैं, कोई ऐसी जॉब चाहिए जिसमें इंग्लिश की ज़रूरत ना पड़े या भगवान मुझे कभी इंग्लिश का यूज़ ना करना पड़े, नो दैट्स नॉट गोना हैपन. तो लिसनिंग और रीडिंग आपके फर्स्ट स्टेप्स होने चाहिए. ये दो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में रेगुलरली करनी चाहिए. मेक इंग्लिश पार्ट ऑफ योर लाइफ. आपको कंटेंट कंजम्पशन पसंद होगा, आपके कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको बहुत पसंद है ना. प्रॉबेबली कुकिंग होता है किसी का आर्ट एंड क्राफ्ट होता है. योर इनकमिंग स्किल्स, वर्क ऑन योर लिसनिंग एंड योर रीडिंग स्किल्स. और स्पीकिंग में बहुत हेल्प करता है. स्पीकिंग इज हमें लोगों के सामने बोलने में बहुत अजीब लगता है. अरे मेरी ग्रामर खराब हो जाएगी, मैंने किस किसी का आर्ट लगा दिया, हम क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगा. आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ. वन थिंग विच यू कैन डू टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस इज मिरर स्पीकिंग, मिरर टॉकिंग. टॉक टू योरसेल्फ इन मिरर. आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए. दुनिया में अगर आप अपने आप को फेस कर सकते हैं, आई टेल यू देयर इज नोबडी जिसको आप फेस नहीं कर सकते. Award 2015 by International Publication House. Appreciation later by Ms. Menika Sanjay. Invited speaker at IIT Delhi, Department of Management Studies at 6th International. There are two things in your life when you want to become a teacher. This particular profession is a very, very sacred profession. This profession is because you are dealing with the future of the country. You are dealing with children, those who have very, very tender mind, and you have to mold them as per their requirements. You know, gone are the days when we used to teach them A, B, C, D, E, F, G, H and 1, 2, 3, 4, 5. Things have changed now. This I have realized when I was talking and interacting with the principal ma'am that in 1999 when I was chief coordinator with Cambridge University, London, for 3 years, I realized that teaching process in India is way different from the entire world. It's different, you know, because our teaching is not child-centric. Here the teaching is the teacher-centric. Sincere request is, if you have the passion, then you choose this profession, otherwise don't. Otherwise don't. I mean, you can't say it's a stopover. Teaching is not stopover. Teaching is not a profession where you go and earn your pocket money because you are preparing for the competitive exams, and then finally once you get through the competitive exam you leave that profession. Middle of the session, then it's a problem for our principal to again look for a teacher, and not even a second you take and you don't even think about the students who are there. What will happen till the new teacher will be appointed? That 2 months, what that children are going to do?
So this profession, and it's a very beautiful profession. इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन ये है कि आप उस प्रोफेशन में कंटिन्यू करना विदाउट योर मीनिंग टू इट, वो बुरी बात है। पॉइंट ये है, पॉइंट ये नहीं है कि आप, क्योंकि नोबडी कैन डिसाइड, अगर आपको अभी टीचिंग प्रोफेशन मिल गया है तो आपको लेना ही है, और जब वो करते हो आहिस्ता आहिस्ता आपको उसमें इंजॉयमेंट आती है, आप में उसमें अच्छा लगने लगता है, तो यू कंटिन्यू विद इट। लेकिन बिना उसके आप में कि अगर आपका मन नहीं है उसको करने का, उसके बाद भी कंटिन्यू करते हो, that should not be done. Then you will not be able to justice with the students whom you are dealing with. इससे पहले पूछा तो आपने बोला इतने सब मेंटर्स को किया और फाइनली आज अपने मेंटर के साथ भी खड़े हो, तो कैसा लग रहा है कि लेक्चरर्स एक तरफ जहाँ पे यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल रैंक के पर्सन लेक्चर दे रहे, वहाँ पे आज बीएड स्टूडेंट भी एक लेक्चर दे रहे एंटरप्रेन्योर के तौर पे? Well, I think this is a great opportunity for me. This has been handed down to me by my mentor, Professor Shalini Rana. I really want to thank her for this. And अच्छा लग रहा है. I feel nice. We have listened a single line which was very hardly touched to us. कि जब आप किसी कॉलेज में जाते हो वहाँ पे 400 बच्चे होते हैं, लेकिन बीएड एक ऐसा दौर था जो आप मिस करते हो. कितना सच है इस बात में? ये सच में सच है. इसमें कुछ वो नहीं है. सीरियसली आप देखें, आप ग्रेजुएशन में मास्टर्स के टाइम पे you'll have hundreds of students in a class and there is no professor and student relation on a personal level. But B.Ed में खासकर in an esteemed institution like GCOE, जहाँ पर very few seats are available, very limited number of students can enroll, वहाँ पर इतने सारे teachers हैं and exactly you frame one-on-one connection. तो ये बिल्कुल सच है and I really have experienced it throughout my course and that is why I have been able to stand here and say all of these things in front of you. As a mentor कैसा लगता है जब आपके स्टूडेंट इस तरह करते हैं? As a mentor and as a faculty of GCOE Jammu, we are really proud of our student. She had been a very bright student. उससे बढ़कर जो चीज़ बाकी बच्चे इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि ये एक एंटरप्रेन्योर है. और मैंने ये भी अभी रिसेंटली जाना कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया एंड शी इज़ अर्निंग मोर देन 1 लाख पर मंथ. और मुझे लगता है कि बाकी बच्चे जो अनएम्प्लॉयमेंट की शिकायत करते हैं, जब तक वो अपने आप को स्किल्ड नहीं बनाएंगे, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है. तो मुझे लगता है बच्चों को आकृति से सीख लेनी चाहिए. हम इनके मेंटर थे, अब आज हम इतने प्राउड फील करें कि ये आगे मेंटरिंग कर रही हैं और आगे भी हमारे कॉलेज में ये आती रहेंगी. एज अ प्राउड एलुमनाई जो हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स को मेंटोरिंग करती रहेंगी और बाकी बच्चों को इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आरुषि है एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन. आज हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज हुआ इवेंट जिसमें निर्मल महाना मैम आए हैं एंड शी इज़ गिविंग अस lecture on how you can express yourself in interviews the best way, because teacher जो है he is not just a teacher, he is ambassador in every field. वो जहाँ भी जाएंगे सिखाएंगे एंड हमें कैसे खुद को एक्सप्रेस करना है, कैसे हम इंटरव्यू में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे. तो एंड वो बहुत अच्छे से हमें पूरे एक स्टेप बता रहे हैं हमने कैसे एंटर करना है, देन पूरा स्टेप वाइज हम कैसे इंटरव्यू में हम जाएंगे, कैसे हम अपना पूरा इंटरव्यू बेस्ट तरीके से दे सकते हैं. एंड अभी मेरा 4th सेमेस्टर है एंड इसके बाद हम अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमें ये गाइडेंस मिल रही है कि हम कैसे इंटरव्यूज़ में अप्लाई करेंगे एंड कैसे वहाँ पे जाके हम अपना बेस्ट देंगे. Good morning, I am Sukanya Bhav from Government College of Education Jammu. Today, as our college is has organized an event on how to give interviews. So Nirmal Mahana ma'am is giving us the information about that, and I think this information is very important for us to know, because giving interviews is a very important part of our life. It not only comes teaching only, actually it is not even limited to certain things, but the interview is the main thing which one really needs to understand and have hold over it. And ये जो टीचिंग के बारे में आज हमें मैम बता रही हैं, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर जूनियर लेवल टीचिंग और समथिंग एल्स, इट्स ऑल्सो फॉर दी एमएड टीचिंग एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स. एंड एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमें बताया गया है टू नो आवर रूट्स. सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमें यही बताती है कि आप सिर्फ टीचिंग को
पढ़ाने तक सीमित नहीं रखिए, आप टीचिंग में ऐसी एक्टिविटीज़ भी ऐड करिए जो बच्चों की स्किल्स को इन्हांस करे, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए जो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट करवाए, उनकी कॉग्निटिव थिंकिंग, उनकी इमेजिनेटिव थिंकिंग को इन्हांस करे। सो आई थिंक ये NEP जो है हमें टीचिंग जो हाउ टू फेस द इंटरव्यू, ये हमें हेल्प करेगा NEP के अकॉर्डिंगली भी, और पॉजिटिव अबाउट इट, एंड दिस इज़ रियली इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू। हेलो, आई एम डॉक्टर शुभ्रा जम्वाल और मैं एलुमनाई सेल इंचार्ज हूँ यहाँ पे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, ये जितने हमारे एलुमनाइज हैं, एमिनेंट एलुमनाइज, दोज हु हैव पास्ड आउट फ्रॉम आवर कॉलेज, they have come back to their college and they are giving their expertise on various subjects, जिसमें से communication skills है, how to face interviews है, ये सब टॉपिक्स जो हैं वो आज कवर अप करेंगे और हमारे स्टूडेंट्स जो आगे फर्दर टीचर प्यूपल टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। शुभम मैम, हम देखते हैं आप हर टाइम आपका जो कॉलेज है, आप हो गए, शालिनी मैम हो गए, आपके प्रिंसिपल जो भी आते हैं, आप उनसे इतने सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ कराते हैं। ये NEP की अंदर लिस्ट है या मतलब आपके सबके खुद के आइडियाज़ होते हैं? डेफिनेटली ये NEP पे तो है ही हैं, बट एक इनिशिएटिव एज अ टीचर बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमारी प्रिंसिपल मैम भी बहुत सपोर्ट करती है हमें इन ईच एंड एवरी इवेंट, एंड she approves actually whatever suggestions we give. मैम, आपके टाइम पे B.Ed 1 साल का होता था, 2 साल का है, तो कुछ फ़र्क उसमें अलग और इसमें कुछ अलग लगता है? Yes, definitely, क्योंकि अब हमारे बच्चे जो है 1 साल का तो टाइम पता ही नहीं चलता, जब क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है वो हमें कवर अप करने होते हैं, तो दे आर प्रोफेशनल टीचर्स, तो डेफिनेटली दे नीड मच मोर टाइम एंड टू to groom up their personalities. It is very important to give them little more time. So I think that is much valid this time. Thank you. Speak up. If you do not talk about the issues that you are facing, if you do not talk about the problems that you are facing, do not expect anybody else to talk about it. अगर आप खुद से बात नहीं करेंगे, कोई और आपके लिए बात नहीं करेगा. If somebody is talking you have to stop him right there. If you don't talk about it, if you don't stop it, one day he stalks you, next day he touches you. Stop it right there and talk about it. And do not expect anybody else to do it for you. आप अपने बारे में बात नहीं करेंगे, आप अपने इश्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे, कोई और क्यों करेगा? Anything that you want to change in the society, be the change you wish to see in the world, you have to initiate, you have to start, you have to speak up. And for that, you need something really important, that is effective communication. How do you communicate? When I was inside, ma'am was there and the principal ma'am, we were discussing about some issues. So ma'am, there is something really important we always have to do. Do you have a marker? If you understand this, this will help you a lot in your life, and then you can share it with us. Process versus person. Ma'am and I, we were discussing about some political situation. नहीं, जोश नहीं है. I have a right. I have a right. लेकिन वो कब कर पाएंगे हम, जब हम सुनेंगे. Jammu feeling immense pleasure to deliver the formal vote of thanks at the end of this highly insightful one-day workshop on how to face interview and communication skills. First of all, I would like to express my deep sense of gratitude to the patron of this event, our worthy principal ma'am, Professor Ekta Gupta, for always supporting and encouraging us for making such kind of events successful in her absentia. I would like to extend my wholehearted thanks to our today's speaker, Miss Akriti ma'am. Your kind, practical ideas and thoughts are going to help our students performing well in their future teaching related endeavors. Thank my seniors and all fellow colleagues who remain presented here and grace this event. I also take this privilege to thank all the student participants who remained active listeners. Good luck for your future endeavors as well. At last, my genuine thanks to the media persons for all the full coverage of this event. मैं अगर हार जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं हार मान लूं
ये मेरी फितरत में नहीं है। थैंक यू।